we saw the tiger. It came out and it came out from where we were expecting it to come out. Shy है, female है, अंदर को चली गई. बहुत बड़ी नहीं है, approximately 2.5 years की होगी. Nose was totally pink and the first frame we got, we could capture its inquisitive expression. Very good morning to you all. अभी हम लोग कॉर्बेट मचान में हैं and we are all set to start with our morning safari today. कल शाम को एक सफारी की थी, दिल्ली से कल ही पहुँचे थे and कल शाम को मूवमेंट बहुत अच्छा था जंगल के अंदर. However, we could not really get some interesting shots. बारिश हुई है, जंगल बहुत ग्रीन है अंदर से. हम लोग की सफारी झिरना में होगी आज और कल भी झिरना में थी. जोन इस टाइम बहुत सुंदर लग रहा है, बट द ओनली थिंग इज कि कल बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. ऐसा मानसून में डेफिनेटली हो सकता है बिकॉज विजिबिलिटी कम रहती है, जंगल लश ग्रीन रहता है and most of the opportunities that you get to photograph animals are on the road or near the road. So that's pretty much acceptable. कल ऐसा था, but the good part is हम लोग को कल बहुत fresh pug marks मिले, kill के dragging marks मिले, and that too in the area where the mother and the cubs live. So we are really looking forward to today's morning safari. It's 5 AM and we are leaving for the morning safari. और gate जो है वो 5:45 का है, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट का ग्रेस लेते हुए हम मचान से निकल रहे हैं. इट्स अ होटल इन अ विलेज कॉल्ड टेढ़ा and the property is beautifully made. The rooms are pretty spacious, the service is great, the staff is very courteous and amazing. So if you are in Corbett, you can definitely consider checking this place out. I will be putting the link of the website of the hotel below in the description, and you can click on it, you can book from there and have a great experience. So right now we are at ढीला गेट and ढीला गेट से ही आप झिरना के लिए एंट्री लेते हैं और ढीला के लिए भी एंट्री लेते हैं. ये दो जोन हैं कॉर्बेट में. हम लोग की सफारी आज झिरना में है. सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक एंट्री फ्रॉम ढीला गेट एंड देन टुवर्ड्स द राइट साइड इज द झिरना zone from where we will start our safari. But ढीला gate will open at 5:45 and before that you cannot enter in the jungle. जिस टाइम का गेट है एग्जैक्टली उसी टाइम वो गेट खुलेगा. और वो टाइमिंग्स जो है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की. और ये जो टाइमिंग्स हैं ये सीज़न टू सीज़न टाइम ऑफ द ईयर चेंज होते रहते हैं. सो अभी फ़िलहाल के लिए जो टाइम है वो 5:45 है एंड एग्जैक्टली 5:45 गेट खुलेगा एंड देन वी आर गोइंग टू एंटर द गेट. सो झिरना जोन एंटर करते ही हम लोग को अभी मिली जंगल कैट. लाइट लो है, रोड पे थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर्स नहीं आए. बैक से थी बट अंदर ग्रास की तरफ चली गई. वी वेटेड फॉर अ वाइल, मे बी वापस रोड पे आए बिकॉज रोड पे ही चल रही थी एंड प्रॉब्ली इट वाज आउट ऑन अ हंट और समथिंग बट इट डिड नॉट कम ऑन द रोड. सो द ओनली record shot that I could manage is this one and that is all. बट आज जो मॉर्निंग है उस हिसाब से जंगल के अंदर एक्टिविटी काफ़ी है. ऑलरेडी पीकॉक्स एंड डियर्स वी हैव सीन रनिंग ऑन द रोड, बीइंग ऑन द रोड एंड द जंगल कैट. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज सफारी. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Jungle cat and then jackals. 3 jackals थे. One of the jackal was eating something. ये झिरना के गेट के बिल्कुल पीछे है. This is the main gate at the back and normally jackals आपको यहीं पर मिलते हैं. This is the same place where that jackal illusion image has been shot. It must be on your screen right now. So ये जो फोटोग्राफ था ये हम लोगों ने खींचा था विंटर्स में. मिस्ट थी बैकग्राउंड में. 2 of the jackals were a little near, getting the jackals to kind of come adjacent to each other in order to get these frames, and it was a very interesting moment. And at the same time I got the vultures also here itself in the Jhirna zone. This zone is very rich in terms of flora and fauna. Of course prey base is also very good inside the jungle. और bear का moment भी बहुत अच्छा रहता है. Although I have not seen it in this particular zone, but I've heard that sloth bear का moment यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है. And tigers तो है ही.
So after shooting the jackals on the road while we were driving in the jungle, within the first half an hour of our safari, we came across one of the most shy tigress in the Jhirna zone who was coming right on the road, and the moment she saw us, she went inside the bushes. So morning has been good so far. Guste we came across a female, very shy female. The road aa rahi thi, and then the moment it saw the vehicle, it went inside. It sat in the stalking position. Very, very beautiful to see in itself. Unfortunately, we could not capture that particular position because the camera was not ready and the vehicle was moving. But we got a couple of shots of the female sitting inside the bushes. Pretty shy, so we've given it kind of a lot of distance on the road because expectation here that it should come back on the road and start moving. So we are standing on the road itself, waiting for it to move towards us and to see if we can get another glimpse of it. But for now, this is the picture that I've got. From there, as just like we were expecting, but it's too shy. तो गाड़ी देखकर भी वो कट गई, although गाड़ी बहुत दूर थी. फिर भी it did not kind of stop for a second. Now it has entered from this area, and we are expecting to see it from the other side. So let's see. We saw the tiger, it came out, and it came out from where we were expecting it to come out. Shy है, female है, अंदर को चली गई. बहुत बड़ी नहीं है, approximately 2.5 years की होगी. Was totally pink, and the first frame we got, we could capture its inquisitive expression. So here is a series of 3 frames. Just keep looking at the eye, and you will be able to see how the interesting expressions of the tigress change when it sees us outside the grass. Looking at it through the grass. तो रोड पर आई, थोड़ा सा हमने गैप दिया हुआ था उसको क्योंकि एक्सपेक्टेशन था कि रोड से आएगी. And that is what you do with shy animals. You need to give them some space. You need to give them a breather. We gave a lot of space. It walked on the road, but जैसे ही उसने गाड़ी को देखा, वो फिर से अंदर चली गई. And then walked towards the grass, through the grass, and it started climbing on. So we could see it from there. Then there was this window in which it came out in the patch, the open patch, and that is the time we shot. बाकी टाइम वो grass में चल रही थी, but very shy female. And in the monsoons, getting a shy female in a place like Jhirna is an experience in itself. So far, the morning safari was a hit. So going towards the area where there's this female with cubs. So bold female है, bold बच्चे हैं, normally अच्छी sighting दे देते हैं. So we are going to aim for those, and for the next couple of hours we are going to kind of track those. Also बाकी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स अभी मुझे नहीं दिखे हैं कुछ इंटरेस्टिंग कैप्चर करने के लिए, बट हाँ बर्ड्स बहुत अच्छी हैं. पित्ता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर है. तो झरना में एक चीज़ आप ये डेफिनेटली करना कि अगर आप आ रहे हैं तो फोकस ऑन बर्ड्स. इफ़ यू आर अ बर्ड लवर, इट्स वेरी रिच इन बर्डिंग. एंड वी हैव langurs here, one of my favorite subjects, with the babies. So that is something I'm going to capture. Stag toota hua. So got some interesting shots of the langurs. They were real close. They were probably licking the salt that was there on the ground. Interesting shots. There were a couple of interesting shots of the baby langur also. One of my favorite subjects. And a very something that I really want to suggest is कि langurs वो subjects हैं जिन पे आप बहुत अच्छे से basics of photography practice कर सकते हैं. So if you're somebody who's just starting, and if you're somebody who's just exploring the jungle, do not underestimate these common subjects. Try and practice on langurs, try and practice on deers. Don't wait for the tiger because again relatively tiger sighting is something which is rare relative to the other subjects. So tiger sighting के time पे if you just switch on your camera, that will not make you equipped enough with the skills to get the kind of shots that you want. बहुत बारी complaints आती हैं कि मैम टाइगर शॉट्स ब्लर हो जाते हैं. उस टाइम पे एक तो एक्साइटमेंट बहुत होती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि
You practice on the common subjects. आपको camera in and out अपना पता होना चाहिए on the common subjects. And then when the tiger comes, or let's say some big cat comes, or let's say a rare moment comes, that is the time you're able to shoot. You know what's my favorite part about wildlife photography? It is absolutely unpredictable. जंगल में आपको नहीं पता है आगे आपको क्या मिलने वाला है, अगले मोड़ पे आपका क्या वेट कर रहा है. और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ. जंगल एग्जिट करते करते एक बड़ा डियर्स का हर्ड रोड क्रॉस कर रहा था, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई गॉट द चांस टू शूट द इमेज डियर ऑक्टोपस.